Good morning, everyone. Today I woke up with a calm mind and a beautiful thought to start my day with a visit to the temple. Sometimes life becomes so busy that we forgot to pause and thank the Almighty for what we have. We started a bike and began a journey. The morning wind touched my face and the roads were peaceful. Riding through these green fields and empty lanes, it felt like nature itself was blessing me. Finally, we reached the temple. The sound of bell and the chants filled the air. I bowed down and prayed for strength, peace, and happiness of my student and family. Standing there in front of God, I felt sense of calmness that word can't describe. There was an old grandma who told us about the history of the temple. And then, after spending some time there, it was time to head back. But the day didn't end there. It had just begun. Because after finding peace, it was time to share that positivity with my students. As a teacher, my classroom is my second temple, my students, my inspirations. I shared what I learned today, that every day gives us a chance to learn something, to grow and to thank life for its blessing. कैसे कर रहा था? हाँ? कहाँ था बाबू? हाँ? क्या कैसे कर रहा था साहब? In the last period, we did some decorative activity, and then the school bell rang. I rode back to home with heart full of peace. A ride to the temple gave me blessings, and a day with my students gave me purpose. After school, I came back home a bit tired, and that's when my brother said, "Tomorrow is Sunday. Let's go somewhere." And just like that, our plan for a small day out, for a small picnic, was born. The next morning was perfect for an adventure. We took our bike again and headed to a place surrounded by nature. A beautiful jungle area, calm and green, not too far from home. ये जगह एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। चारों तरफ बड़े बड़े बहुत ही पुराने पेड़ हैं। एक्चुअली ये जब हम लोग पहले जाया करते थे पुरुलिया, तो तब से ये चीज़ देखते आ रहे हैं। वैसे एक टाइम ऐसा था जब ये सब इलाका लूटमार और डाकुओं के नाम से बहुत ही कुख्यात था, कह सकते हैं। मतलब ऐसा था कि इस एरिया से आमतौर पर रात को लोग गुजरने से डरते थे, बट आजकल वो चीज़ नहीं है बाय द वे। और इसीलिए इस जगह का सुंदरता बहुत ही कमाल का है। एक्चुअली सामने यहाँ पे रोड है। रात को ऑलमोस्ट शाम होने से पहले लोग यहाँ से गुजर जाना प्रेफर करते थे। ये बात मुझे वैसे मेरे फादर ने ही बताया कि हाँ, यहाँ पे एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा। और उधर मेरे भैया खड़ा है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रुके थे थोड़ा खाना खाने के लिए। छोटा सा एक स्मॉल पिकनिक टाइप का हो गया यहाँ पे हम लोग का। एक्चुअली आते टाइम पे मैंने 2 पैकेट बिरयानी पैक करा लिया था,
तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि जगह बहुत ही सुंदर है, तो यहाँ पे रुक के हम दोनों ने खा लिया है। थोड़ा सा बस टाइम हो गया है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जगह बहुत ही बड़ा इलाका में है ये चीज़, बहुत दूर दूर तक बस ऐसे ही पुराने बहुत ही पुराने पेड़ है। और हाँ, वैसे ये भी कह सकता हूँ ये कपल सेंट्रिक प्लेस नहीं है, क्योंकि बगल में एक गांव भी है और वहाँ के लोग जो है वो उतने ओपन माइंडेड नहीं है। तो ऐसे ठीक है जगह, आप फैमिली के साथ आ सकते हो, थोड़ा मोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, बढ़िया जगह है, सुंदर सा। और अभी एक्चुअली घर जाएंगे। ये एक्चुअली आई थिंक फ़ोन में किससे बात कर रहे हैं, तो ठीक है, मिलते हैं यहाँ से अगर हमारे अगले सफ़र में। We spent hours there, talking, relaxing, clicking photos, and just enjoying the simplicity of life. No city noise, no rush, only peace, laughter, and brotherhood. After an amazing time, we started our ride back home. The beautiful views, the quiet road, and that satisfying silence after a joyful day, it felt complete. 2 days, 2 rides, 2 experiences, one peaceful and one playful. Life really is about these small moments that fills our heart and reminds us that happiness doesn't always need big plans. Just a grateful heart and a free spirit is all enough.